ऐसे ना करें ना, थोड़ा सा थोड़ी सी हमारी भी कदर कर लें। एंट्री 3 को ट्रीटीज की तो मैंने बात ही नहीं आपसे की। नहीं आप सुनते ही नहीं है ना, आप सुन भी लेना। ट्रीटी की मैंने बात ही नहीं की। मैं तो आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान चले ट्रीटी के खिलाफ ही कर रहा है काम। ट्रीटीज में क्यों जोड़ रहे हैं हम? भाई किसी को आउटर स्पेस से प्रोग्राम करना है, इंडिया ने किया कोई ट्रीटी के जरिए कर रही है। अगर हम कल शुरू करना चाहें तो आपके मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो अगर कर सकते हैं तो वो कौन सा पावर पार्लियामान इस्तेमाल करेगा? लेजिस्लेटिव एंट्रीज में बहुत सी आप बता देना मुझे एक फॉर एग्जांपल मैं आप जैसे ये अगर इसमें ये न्यूक्लियर एनर्जी का न्यूक्लियर की बात आया उसके अंदर मैलॉर्ड आपने मकलक वर्सेस मेरीलैंड का केस आपने आप लोग इतने मुतासिर हो गए हैं अमेरिकन। हम आपसे आप हमारा रिटर्न आइन है उसकी हम बात कर रहे हैं, उनका आइन अपनी जगह है। मैं आपकी जजमेंट जो कि आपने भाई आप जजमेंट को छोड़ दीजिए ना, सिविल एविएशन अथॉरिटी के केस में दी उसमें आपने आप जरा ठहर जाइए ना, तसल्ली से बहस करें ना। बिल्कुल या तो आप ये आर्गुमेंट पेश ना करें। जब आप ये पेश करते हैं ये बहस सामने या एक मफरूजा करते हैं कि इट इज एज गिवन, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। या तो क्या मैं ये वापस लेता हूँ ये बात को। आप कहते हैं कि पार्लियामान सिर्फ वो काम कर सकती है जो 142 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट या एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। या तो कहीं मैं इस बात को वापस लेता हूँ। अगर आप इस बात पे खड़े हुए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देते हैं, आप कहते हैं मैरीलैंड वर्सेस उसमें देख लें, भी उसको कम क्यों देखें? माय लॉर्ड मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो केस तैयार करके नहीं आया नहीं जी, मैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे हूं, उस पे मैं सवाल उस पे बात करें ना। फिर आप ये ब्रॉड स्ट्रोक्स ना पेंट कीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं आपसे कहीं से आप ब्रॉड स्ट्रोक्स जब पेंट करते हैं अपने लिए मसले खड़े कर देते हैं तो आप फोकस्ड रहें इसी बात पे। मैं तो 142 जी लर्नड काउंसिल यहां पे लर्नड काउंसिल एंट्री आप आइटम 58 देखेंगे जी, आइटम 58 और दूसरा मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा नॉटविथस्टैंडिंग आर्टिकल 191 आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि द पार्लियामेंट इज bereft of jurisdiction to legislate in the context of any of the fundamental rights or access to justice. My lord, I have not articulated my argument as yet. अगर आप ये अगर आप कर लें, I think बेहतर होगा अगर आप argue as you want. Please go back to your. I apologize. You argue as you want. Your lordship should not apologize. चलिए करिए. My lord, for 2 days I have heard all our questions. करिए. Let me address those questions. Yes, is what I'm saying. Yes. My lord, I will answer your lordship's question also. अब आप कर लीजिए ना. My lord, the starting point for legislative competence is entry article 142 or the body of the constitution. Now body of the constitution for our present purposes the only article relevant is article 191. In the legislative list there is entry 55. Now these are the two provisions that have to be interpreted and read. Article as I read article 175(2), the expression subject to law, which is used in 191, is used in various other articles also. That by itself does not confer any legislative power or on any identified legislature. Just kindly look at Article 14. Article 14. 1-4. Dignity of man. Dignity of man. Article 14. It says, the dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. This by itself doesn't say who will make the law. The province will make the law or the federation will make the law. In order to determine who can make the law for the purposes of Article 14, you have to go to other provisions of the Constitution. The same is with respect my submission for Article 191 also. ये आर्ग्यूमेंट आप पूरा तो कर लें तो प्राइवेसी के मुतालिक कौन बना सकता है कानून? मतलब फेडरेशन भी बना सकती है और प्रोविंस भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव पावर स्प्रेड कैसे है, और दोनों ने बनाए हुए हैं क्योंकि क्रिमिनल लॉ, पीनल लॉ पे हो सकता है गलत बनाए हों जी, प्रोविंस भी बना सकता है। और प्राइवेसी वगैरह के बारे में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, फेडरेशन ने भी बनाया हुआ है। नहीं, पर उसी तरह अगर चलें तो 191 में सब्जेक्ट टू लॉ है, एंड सपोज देयर इज नो, एंड आई थिंक देयर इजंट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री
relating to practice and procedure. There is no. So then the word law would become redundant in 191? No, my lord. How? No, What would happen to that? That's exactly what I'm saying. I'm trying to proceed step by step. So 191, as I read it, my lord, the mere fact that the expression subject to law is used does not confer any legislative power, just as that it doesn't confer any legislative power under Article 14. What it is, my lord, the power is conferred on the Supreme Court. The power is on the Supreme Court to make rules. Subject to law is a limitation on that. It's a limitation on the power that has been granted to the Supreme Court. My lord, there are two Supreme Court judgments which say that, my lord, your lordship, I've mentioned them in my, in my written submission. Mr. Bhandari, do you mean that Judgment cite kar The first citation. Mr. Bhandari, do you mean that before making rules, there must be some law? Well, I'm not saying that. There may be. So subject to law, what does it mean, subject to law? Well, and a validly enacted law by the appropriate legislature. It could be pre-existing. It could Without any enactment, rule cannot be made. no, rules can be made. They can But be subject to law. My lord, the rule-making power is a standalone, independent power on the Supreme Court. But subject to law. If there is a law, then the Parliament can make that law within the limits that I will just explain. You said Parliament can make a law. Parliament can, but I will just explain what, in my humble understanding, are the limits on that. I will explain that. But there, citations there. Ji, my lord, Mr. Bhandari, that is subject to Constitution and law. So you borrowed this power from the Constitution and subsequently you made rules. yes, my lord. This is the intent. This is the intent. This is the intent. My lord, the citation is by Muhammad Khan versus Border Allotment Committee, PLD 1965, Supreme Court 623, at page 633. For what proposition? My lord, this expression, subject to Constitution and law, was discussed in detail by Mr. Justice Keikaus in his judgment, and this was then followed in LDA versus Rana Mubashir, 2015 SCMR 1739. एक सेकंड दूसरा कौन सा है? 2015 SCMR अब तो दो है 1739. ठीक है, ये phrase LDA versus discussed हुआ Rana Mubashir. this phrase has been discussed. This phrase, subject to the Constitution and the law, कैसे किस नतीजे पे पहुंचे? and they said that it means that the power which is being made subject must be made subject to a law which is derived from some other power in the Constitution. ठीक. So that's my submission, that when it says subject to the law in Article 191, in order to know what law can be made under in this context, you will have to go to other provisions of the Constitution. रेलिवेंट पेज बता दीजिए उसका कौन सा जजमेंट है? Well, at 65 Supreme Court 623 at 633. 633 और दूसरे वाले का? And Imrana Tivana का है जी 2015 SCMR 1739, paras 51 to 53 at 1764 1765. लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी वो टिवाना इस वाली लॉ की सोर्स पर क्या? गो अहेड. इसकी. So this by itself, I say. So you go back to 142, and there is no other provision in the body of the Constitution dealing with this. So my lord, you go back to 142. 142 takes you to entry 55. So let us see whether there is any Entry 55 is only related to the jurisdiction part. My lord, it will also cover practice and procedure. Just let me explain why. इट इज ओनली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. Hello, what? ये जो आप अभी बता रहे हैं ना, इसमें तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड लॉ के ऊपर नहीं है. इसके ऊपर आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं, केकाउट साहब ने स्पेसिफिकली सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ भी डिस्कस किया. जजमेंट है ना, ये एलडीए का जो जजमेंट है इमरान टिवाना का. नहीं सर, आप केकाउट वाला देखिए. केकाउट साहब की द ओनली वर्ड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नो सर, ये जो 65 सुप्रीम कोर्ट है उसमें दोनों डिस्कस. इट इज रेफरिंग द आर्टिकल 142. उसमें तो शब्द लफ्ज ही शुरू में वो इंट्रोडक्टरी है, तो सब्जेक्ट तो बताया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन. जी, बट जो 65 सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये उन्होंने सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ दोनों को डिस्कस किया है. बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त. अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात
यकीन के साथ।